इसको क्लोज कर दो, क्लोज ये क्लोज करो ना। इस पे नहीं आ रहा है। Hello, good evening. So we are all back on the success yatra, the success journey, which we planned last 15 days back. We are on our second travel of success journey. But before I go ahead, I want to share with you something very interesting. So I will put my PPT on and see this. This is our logo for the Success Yatra. How do I get it? So after my last episode, I showed it to my student, past student, and he is a critic. He told me that, ma'am, your logo is not good and presentation was not good. You have to change it. So, बच्चों की तो सुननी है, and I approached my other set of past students, the Penta Blue Agency team, Tarun, Pratik, and Surabhi. And I told them, I want you to help me with this video talk series logo. And unbelievably, within a few hours, this logo comes to us. I'm sure you all like this logo. It's so beautifully, creatively designed. I was so happy after receiving this logo. And they also helped me with making this templates, because that student of mine who told me that your presentation is not good, his name is Gaurav Khandagle. So then he told me that you have to share me your presentations before you go in for your second series of talk. And I shared with him, and he helped me with the PPT, and see what an amazing job he has done with it. I'm so happy. So this is, all the teachers will agree that this is the advantage of how we teachers enjoy. See, such a beautiful presentation he has made. So, okay. So I want to, on record, thank these students, Tarun and Pratik and Surabhi of PNW, for helping us with such a beautiful logo, and Gaurav for helping me with the presentation and all his marvelous suggestions and ideas. Because I also always believe that whatever you are doing, do it with a full heart and do it best, so that I'm sure with this kind of logo and presentation, it will become even more interesting for you to attend this talk. So today we are going to talk on a very interesting topic. We decided last week that whatever we are going to do, to help us become better people, more successful people. That's why our talk is Success Yatra. So, a very basic, a very fundamental requirement for being a better person, more successful in life, achieving what you desire for, you first have to understand and know your own self in a best possible manner. So today we will discuss that how do we do that. Okay, so I'm going to again share my PPT with you
to make you know that what we are going to discuss today. So the first thing is we are going to know what is self-awareness. Second thing, why we should be self-aware. And third, how or what we should be doing to become self-aware. Okay. I want you to continue with your responses whenever and wherever I will be sharing certain things with you and asking you some questions. I am watching your responses on the mobile so that we keep this talk interactive. Now, our first statement in this discussion is that self-awareness is having knowledge about three things. We are a compact of some aspects of our personality, some of our behavior aspects, and some are our capabilities. Now, what are these? I will explain to you using a very simple example. We will try to make it as light and as engaging as possible. So, if we have to understand that what is self-awareness, I told you it includes three things: awareness about your personality, awareness about your uh, behavior, and your capabilities. So, what is this personality? Personality is that aspect of you which involves the habits, some things which you have kept on doing over and over again, which became your personality, and now they are a part of your, which became your habit. And because they are your habit, they have now become your part of your personality. It's part of your life. Okay, I'll give you an example over here to understand that how this personality works with you, with anybody, with a person. So if you are, so we'll take the example of a person, a kid, a child, who is studying in school and a good boy otherwise, but he has one personality factor जिससे उसके टीचर्स बहुत परेशान हैं. अब ये क्या पर्सनालिटी फैक्टर है? वो क्लास में गाली देता है. तो वो बच्चा क्लास में गाली देता है, टीचर्स को ये पसंद नहीं है, टीचर्स ने उसको समझाया. They have made him understand, प्यार से धमकी देके कि ये अच्छी बात नहीं है, you should stop it. पर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है एंड उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि टीचर्स घबरा रहे हैं. So what does the teacher do next? Take to the principal. अब आजकल के जमाने में बच्चों को डांटा नहीं जाता, पनिश नहीं किया जाता. प्रिंसिपल ने सोचा मेरे एक्सपर्टीज से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. प्रिंसिपल ने इसको समझाया, थोड़ा सा डांटा, फिर देखा फिर भी बच्चा आदत से मजबूर है. टीचर्स परेशान होके फिर सोचा कि we should call the parent. And generally ये sequence होता है, you will agree schools में. So डैडी को बुलाया, डैडी आए, प्रिंसिपल टीचर्स तुम गुस्से में, ये बच्चा गाली देता है, हमने समझाया, टीचर ने, प्रिंसिपल ने, आप समझिए दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, क्लास का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आप समझाइए इसे, घर पे इतना टाइम जब रहता है इसे सिखाइए. डैडी एकदम गुस्से में, उनको शर्म आ रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है. तो डैडी क्या है, तेरे को कितनी बार समझाया है गाली की गाली नहीं देना है.
डैडी के मुंह से गाली निकल गई और फादर, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर सब तंग और गुस्सा। ये क्या चल रहा है, ये तो डैडी ही ऐसे हैं। सो वो डैडी की हैबिट है, डैडी की ये पर्सनालिटी हो गई है और बच्चा सुनता है, बच्चे की अभी हैबिट है, बच्चे की भी पर्सनालिटी हो जाएगी। और डैडी की पर्सनालिटी है इसलिए अनइंटेंशनली, अवेयर नहीं है डैडी के, ये अनइंटेंशनली मैं बोल देता हूँ उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम हो गई। अब आगे क्या हुआ वो तुम सोचिए। सो this is about personality. This is what I wanted to give you an example to understand how damaging, how difficult personality can be. Next, I told you the second thing is behavior. So in behavior, we generally call behavior as that part of a person which is the response or reaction to a particular situation, to a particular incident. So किसी इंसिडेंट या सिचुएशन को हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारे बिहेवियर में लेबल होता है। So one day I was walking with my friend and हम अच्छे से आराम से बात करते हुए, हंसते हुए, खुशी से जा रहे थे। एकदम से थोड़ी देर में वो चीखी, she shouted and she was not next to me. I saw she was standing on one small tank which was nearby. And I started wondering what happened. And I saw a dog sitting a little far away. This girl got scared of the dog. She shouted, screeched, and climbed the tank that वहां तो नहीं आएगा ये. अब वो dog मेरे लिए भी सेम था, उसके लिए भी सेम था. But हमारे responses different थे. This is called as behavior. My behavior looking at the dog was different. Her behavior looking at the dog was different. Because we are different people, we are different individuals. Third, I spoke about capabilities. In your life, you have another very important aspect which is known as capabilities. Capabilities are your skills, your talent, your limits, what you can do till where, how much. Okay, so this we can take with this kind of an example that this girl, she was in college and मेरे को मूवी आई, तो उसको लगा कि ये मेरे को मूवी देखनी चाहिए, पेरेंट्स ने भी एनकरेज किया, उसने देखा और फिर उसको लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटिंग है, मुझे भी बॉक्सिंग करनी है, सीखनी है। तो उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि मुझे जाना है सीखने बॉक्सिंग। सो उसके पेरेंट्स ने बोला नहीं, तेरा इसे तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, स्टैमिना नहीं है, डोंट डू समथिंग लाइक दैट। शी डिड नॉट एग्री। अब पेरेंट्स ने भी सोचा कि ठीक है, जो करती है उसकी मर्जी, हम देखेंगे। आया तो ठीक, अच्छा है, नहीं आया तो एक्सपीरियंस से अपने आप उसको पता चल जाएगा। तो लड़की पूरे एंथुजियाज्म में गई फर्स्ट डे, उसको ठीक लगा, थोड़ा दुखी बॉडी वगैरह, एक्सरसाइज, मेहनत। 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद उसको इतनी पेन्स, इतनी परेशानी, उसने अपने आप पेरेंट्स को बोला नो, आई डोंट वांट टू डू इट। So if we are unaware about our capabilities, our limits, and we take up something, we will not be able to fulfill it and we will get frustrated. So this is about self-awareness. These 3 aspects
We need to understand them clearly about ourselves and move ahead so that we are able to achieve our targets, whatever we set for ourselves in life. We will go to the next slide, which talks about that the same slide, but we will understand that why we need to know self-awareness. So, I am sure every person wants to be a better person. Everybody wants to be able to have their self in their control, be able to manage themselves effectively. They want to be aware about the social aspects around them, and we all want to maintain our relations very well. Now, this self awareness helps you to do. Self awareness helps you to manage yourself. Self awareness gives you an idea about what is your social environment, social aspects, and helps you to understand how to deal with your relations in an effective manner. Now, another very important aspect about self-awareness is that it not only will help you to understand yourself better, but because you have an idea about all this, you will be able to understand the other person also very well. When you understand, obviously, the other person very well, you will be able to have better relations, which are very important for growth. So we will understand these three aspects, or which are called as the important three benefits, three pillars of benefits of self-awareness. So let us take the example of a boy who was growing up and उसको grow up होने टाइम होते होते हुआ स्मोकिंग का आदत हो गया. बच्चों को कॉलेज वगैरह में थोड़ा सा स्टाइल मारना, थोड़ा सा हीरो बनना, उसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग का आदत हो गया. पेरेंट्स गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, उसने बॉदर नहीं किया. फिर थोड़े दिन बाद उसने जॉब ज्वाइन किया. एवरीथिंग इज फाइन, ही इज अदरवाइज अ गुड बॉय, बट ये स्मोकिंग की जो आदत है उसके कारण he has to keep going out every time, because nowadays uh, they don't allow you to smoke in the office premises. So you have to go into the no smoking zone, and तो ये लड़का बार बार इसको उठ के नो स्मोकिंग जोन में जाना पड़ता है. उसमें उसका काम अफेक्ट हो रहा है और वो परेशान हो रहा है. अब अगर उसको अवेयरनेस है खुद की प्रॉब्लम की and he wants to change it, he will have to work on his self control. If he works fast, he will be able to win over, and his bosses will be happy, his work will be done in time, he will be growing. If he doesn't, he will start getting affected on his confidence level. हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है when we are not able to control our certain situations which are not helping us to grow. So that is how self-awareness will help in having self-control and building confidence if you are able to manage it effectively. Second, this boy, because he is smoking, he understands that people don't like to be with him. सोसाइटी में टैबू है ना कि स्मोक करने वाले, ड्रिंक करने वाले अच्छे नहीं होते हैं. देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इवन आवर स्टाफ, इफ यू आर इनटू और any other persons who are into smoking and drinking, a very important aspect, हम अपना पैसा खर्चा करते हैं, हम अब सोचते हैं कि हमको प्लेजर मिल रहा है, लेकिन ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल से जब चली जाती है सिचुएशन, तो अपना पैसा भी जा रहा है, हेल्थ भी खराब हो रही है,
और लोगों के बुराई भी मिल रही है. So 3 नुकसान और फायदा. I don't know. I don't think if we come out of it, we will enjoy life even better. So this boy is understanding कि relatives भी मेरे को like नहीं करते. So he is not having a very good status in the society because of that. And so he's not really happy about it. He would like to have more respect. हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा अपना एक सेल्फ प्राइड कम होने लगता है when we are doing something and people are not talking good about us. So this is how self-awareness will help you to understand that and bring it into a positive level. Third thing, relationship management. Already his parents are unhappy with him. Maybe he will find it difficult to get a girl because girls are also conscious. They don't want people who smoke, drink, because they know later on the person may start falling sick, पैसा भी खर्चा हो जाएगा. So वो अपने रिलेशंस खराब कर रहा है, नेटवर्क खराब कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम खराब हो रहा है उसका, तो उसको फिर ग्रोथ होने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा. So self-awareness gives you an idea about all this, that what I'm doing, if it is wrong, this all will be the situations. At a self-management level, I will have these issues. At social level, I will have these issues. At relationship level, I will have these issues. So I need to come out of it. And how to come out of it, we will understand. I hope you are understanding till now, and I hope you are following and enjoying it. We will go to another very interesting part of self-awareness. So, I will show you a cartoon. You have to see this cartoon and tell me what you are understanding from this. Okay, this is a very popular cartoon strip, Savage Chickens. Now, in this, two chickens are talking and they are demonstrating 3 stages of self-awareness. So you have to look at this. I will tell you what they are. The first one is the first, कुछ गलती हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है और वो पहला चिकन दूसरे चिकन को बोल रहा है यू आर एन इडियट, एंड दूसरा वाला उसको बोलता है नो. ठीक है. सेकेंड स्टेज पे गलती हुई है, पहला चिकन बोल रहा है यू आर एन इडियट, दूसरा चिकन उसको बोलता है यस. थर्ड स्टेज में पहले वाले ने देखा गलती हुई है, कुछ बोला नहीं है उसने अभी तक, उससे पहले ही दूसरा चिकन बोलता है आई एम एन इडियट. What do you understand from these 3 pictures? In these 3 pictures, there are 3 levels of self-awareness, and amongst that, only one level is at a balanced stage. The other 2 are not at the right balance. तो ये तीनों पिक्चर देख के तुमको कौन सा लेवल ऐसा लग रहा है जो बैलेंस स्टेज पे है और बाकी दोनों बैलेंस स्टेज पे नहीं है, ये चैट में डालिए. So YouTube takes a little bit more time to for you to get the answer picture. I'm sure you have seen the picture. Give me your answers that from these 3 chicken, which one 3 stages of the chicken conversation जो उनकी बात चल रही है उसमें से
कौन सा लेवल बैलेंस्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस है? I want you to answer. Yes, I am getting right answers. More of you need to come out with the answers, because this is something for your understanding. With your involvement, you will learn it better. Two of you have told second. Ronnie, why are you changing your answer? Ronnie का first answer correct था, उसने change कर दिया. Okay, let me go to explain. Okay, so for first level में क्या हो रहा है कि वो बोलता है कि you are an idiot, और ये acceptance stage पे नहीं है दूसरा chicken. तो वो नो जब बोलता है तो उसका बोलने का ये मतलब है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरे से ये गलती नहीं हुई है, एंड स्टॉप ब्लेमिंग मी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद मी. वो फर्स्ट स्टेज में वैसा टाइप ऑफ उसका थिंकिंग एंड एटीट्यूड एंड अप्रोच है. सेकंड में ही इज सेइंग यस. यस मींस ही इज टेलिंग दैट लेट मी सी, अगर गलत है तो आई नीड टू इम्प्रूव, अगर गलत नहीं है तो आई विल कम बैक एंड टेल यू हाउ आई एम नॉट राइट. So he simply says yes. तो ये भी नहीं बोलता है कि yes लेकिन तू ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या है वगैरह. सिंपल yes. एंड थर्ड वन, वो बोलने से पहले ये खुद पे ही ले रहा है. आई एम एन इडियट, मेरे से गलती हुई है, मेरा प्रॉब्लम ही रहता है. मैं so I want you to remember, definitely you have met these kind of people. Definitely there are these type of people around you. एक जो बिल्कुल एग्री नहीं करते कि उनसे गलती होती है या गलत है, उसमें कोई प्रॉब्लम है. तीसरा, जो हर टाइम अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सेल्फ सिंपैथी, सेल्फ पिटी में रहते हैं. You have to, if you are in either of these two stages, you have to bring yourself to a balance. थर्ड वाले को अपने आप को ऊपर लाके कंफर्टेबल करना है, ऊपर वाले को अपने आप को थोड़ा सा नरम करके नीचे लाना और एक्सेप्टेंस मोड में आना है. So the first very important aspect is that at least I should know that I am having a problem. If I'm not able to know and understand, how will I change? So that was a very important, nice and good description to make you understand that how generally it happens in people and what we should be doing about that. We'll go to the next stage, which is called as the self-concept. Sorry. So this is the self-concept, and I want you to understand this, to know that how we, so for us as a general person, we think that मैं जो हूँ वो हूँ, बस उतना है. लेकिन psychology says that we live in different forms. Okay, तो एक तो हमारा एक खुद का जो इमेज हमने खुद के बारे में बनाया है, that is called as the mirror image, self image. So we will bring that uncle ji into the story here, जो गाली देते हैं अंकल जी. ठीक है. So
or we'll take him into the situation later. We will bring this boy who drinks and smokes. Okay, so ये जो लड़का है, ये ड्रिंक एंड स्मोक करता है और उसका मिरर इमेज में, उसको सेल्फ इमेज में मालूम है कि वो ड्रिंक और स्मोक करता है, और हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है लड़का, और उसको ग्रो होना है। उसके बॉसेस उसके काम से खुश हैं, वो जानते हैं कि ये ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, काम कर सकता है, लेकिन वो लॉस्ट रह रहा है थोड़ा, क्योंकि उसका ध्यान अब मुझे स्मोक करना चाहिए ना। जब किसी दिन पार्टी के बाद बहुत ड्रिंक कर लिया तो नेक्स्ट डे काम पे नहीं आ पाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। सो ये इंटरफियर कर रहा है उसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स के साथ। और उसका आइडियल सेल्फ इमेज, सो उसका मिरर इमेज है कि ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर, मुझे ग्रो करना है और मुझे इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, लेकिन वो बनने के लिए मुझे स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ना पड़ेगा। क्या वो मुझसे होगा? अगर वो मुझसे नहीं होगा तो मेरा मिरर इमेज और आइडल इमेज के बीच में बहुत गैप है और वो फ्रस्ट्रेशन लाता जाएगा मुझे। सोशल इमेज, मेरा सोशल इमेज, मुझे पता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत पीता है, बहुत ड्रिंक करता है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। मेरा आइडियल सोशल इमेज है, पीपल शुड लाइक मी, पीपल शुड बी हैप्पी विथ मी एंड दे शुड सपोर्ट मी। वहां भी गैप बड़ा है। We'll go back to that Uncle Ji example. I think we will be able to understand that better with that example. So, अपने पॉपुलर अंकल जी, तो उनका सेल्फ इमेज है कि मुझे ये है गाली देने का प्रॉब्लम, मुझे उनका बिजनेस है, मुझे बिजनेस ग्रो करना है और उसके लिए मुझे अपनी आदत इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो उनका आइडियल सेल्फ इमेज ये है कि मुझे एक अच्छा रिस्पेक्टेड आदमी बनना है बड़े बिजनेस में। अब वो उनको कैसे क्लोज नजदीक लाना है मिरर इमेज और सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ इमेज को, वो कैसे अपने आदत पे कंट्रोल करके चेंज करेंगे, उस पर डिपेंड होगा। सेम थिंग अबाउट सोशल इमेज, उनका सोशल इमेज हैप्पी पर्सन है, अच्छे हैं वगैरह, लेकिन गाली देते हैं इसलिए इनसे दूर रहो। सो आइडियल सोशल इमेज उनकी क्लैश हो रही है सोशल इमेज के साथ। So he will also have to change for achieving his ideal social image. So we have to keep this in mind. We all have a mirror image about ourselves and we have an ideal image. मुझे यहाँ ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है इतने साल बाद। मेरा लोग मुझे ऐसा समझते हैं कुछ साल बाद, लेकिन मुझे ऐसा होना, लोग ने मेरे बारे में ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए मुझे। So हम क्या करते हैं वहाँ उसको अचीव करने के लिए, that will bring about a benefit to us, or we will go into frustration and we will become sad in life. Okay, so this is called as self concept, understanding that these are our images with which we live and we should understand them and try to work on them. So this was again very interesting. I want to continue with another very important, a very interesting story I remember over here. So there were these two children. Okay, एक बच्चा था, बहुत खुश, नटखट सा, नॉटी, क्यूरियस बच्चा, तो खेलना पसंद आता था उसको। तो एक दिन मम्मी को बोला कि मैं खेलने जा रहा हूँ। बोला ठीक है जाओ, आसपास ही रहना, जैसे मम्मी लोग सब बोलती हैं। ये बच्चा तो रेस्टलेस नॉटी बच्चा खेलने लगा, चलते चलते काफी आगे चला गया तो उसको एक घर दिखा। वो घर एक खाली घर था।
उसको लगा ये क्या है, मैं देखता हूँ, हाँ कोई जाता नहीं है, मुझे देखने दो अंदर क्या है। अंदर गया तो एक कमरा था, गया, उसको कुछ दिखा नहीं उधर, रुका थोड़ी देर, तो उसने सीढ़ी देखी एक ऊपर जा रही है, तो वो सीढ़ी पर ऊपर गया रूम में। वहां गया तो बहुत सारे बच्चे दिखे, बहुत सारे बच्चे सब ऐसे मस्ती में खेल रहे हैं, खुश हैं। दिखता है, खुश होता है, उतर आता है, घर चला जाता है। थोड़े दिन बाद एक दूसरा बच्चा, जो गुस्से वाला बच्चा, जो एकदम गुस्से में स्टबर्न जिद्दी बच्चा, माँ के साथ झगड़ा करके घर से निकल जाता है। निकलता है तो ये भी काफी आगे निकल आता है, तो इस घर के पास आता है, तो ये भी देखता है बारिश भी हो रही है, भीग गया है, तो सोचता है कि मैं थोड़ा देर इस घर के अंदर रुक जाता हूँ। इधर जाता है, बैठता है नीचे वाले रूम में, उसे ठंड लगने लगती है, तो सोचता है कि मैं देखता हूँ ऊपर ये सीढ़ी में क्या है, ठंड लग रही है, ऊपर कुछ होगा तो मुझे थोड़ा ठंड कम लगेगी। तो ऊपर जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गुस्से में एकदम परेशान जिद्दी से दिखते हैं। नीचे उतर आता है, करके बाहर निकल आता है। Did anybody understand what I tried to tell in this story? So, I will give you the answer. When these two children went up, both of them did not know that that room was a room of mirrors. The room had all mirrors on the wall, so what they saw was a reflection of themselves. This is just a story to explain to you about self-awareness. हम जैसे हैं, हम जैसी अपनी एनर्जी रखते हैं, हम जैसा अपना सोच रखते हैं, हमारा पास वैसे ही अट्रैक्शन आती है, वैसे ही लोग आएंगे हमारे पास। हम खुश रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम गुस्से में रहेंगे, परेशान रहेंगे, जिद्दी रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम और फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। So this life of ours is actually a house of mirrors. We need to understand that, and we need to change so that our life becomes good, happy, enjoyable. How do we do that? Now, our next part of self-awareness is to understand that how do we do it? सब समझ गया मुझे कि ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, इससे ये फायदा है, ये नुकसान है नहीं होने से, लेकिन करना कैसे? अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, टेस्ट हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। I have picked up two very basic methods of how you can do self-awareness for yourself. Now look at this. This actually is a method which has been developed by me. This is a method which I have created, and I feel this is the most simplest and very easy to implement method. So हम वो अपने अंकल जी जो थे, जिनको गाली देने की आदत है, उनको एग्जाम्पल में लाते हैं यहाँ पर, ठीक है? So in this method of how you can
do self-awareness and improve yourself, you have to understand yourself into three parts. One, what are my qualities which help me to do whatever I do in a good way, best way. Somebody may be very good in maths, so that helps them, that becomes their go ahead factor. See the first block, that is the go ahead factor. Somebody is very good in singing, so that becomes their go ahead factor for uh, performance. uh, Areas of development, so in that मेरा आवाज अच्छा है, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा ये इफेक्ट लाना चाहिए, सो वो मुझे डेवलप करने की जरूरत है। और तीसरा, मेरा आवाज अच्छा है, मैं ये इफेक्ट भी ला सकती हूँ, लेकिन मेरे हेल्थ में गले में कुछ प्रॉब्लम है और उसके कारण मुझे बढ़ने नहीं हो रहा है, सो वो ब्लॉक एरिया है, मुझे उसको ट्रीट करना जरूरी है। अब हम इसको, सो फर्स्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर दीस थ्री ब्लॉक्स। सम पार्ट ऑफ अस इज वेयर वी डोंट नीड टू वर्क, वो गो अहेड फैक्टर्स हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो है हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनको, हमने बॉदर नहीं किया उनको चेंज करने। और तीसरे जो हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, जो हमने पता है लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण हमको बहुत प्रॉब्लम है। अब हम वो अंकल जी, ठीक है, सो क्या हो रहा है, अब अंकल जी जो हैं वो जानते हैं कि मैं एक मस्त मौला हूँ, खुश रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुश रहना, खुशी फैलाना। मैं लोगों के साथ बात करके उनको खुश करता हूँ, लोग भी खुश होते हैं मेरे साथ, जोक्स मारता हूँ, मजा आता है, go ahead factor. So because of that, people like being with him. He has good set of friends and he enjoys life. Second factor is where he knows that he is a happy person, but happy कब रहना है और कब नहीं रहना है वो नहीं ध्यान दिया। तो सैड मौके पे कोई क्रिटिकली बीमार है, कहीं पर डेथ हुआ है, वहां जाके भी आप हंसे, जोक मार दिया, लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दे विल नॉट लाइक यू। वो उनसे हो रहा है, तो वो उनको समझ में आ गया है कि ये मुझे डेवलप करना है अपना आदत। हम मुझे सीरियस सिचुएशंस में भी मस्करी और मजा करना, मजाक उड़ाना, जोक मारना ठीक नहीं। एरिया ऑफ डेवलपमेंट, गाली देना बड़ा ब्लॉक एरिया। मस्ती में गाली निकल जाती है, मस्ती में मेरे से मैं बोल देता हूँ और मुझे फिर परेशानी हो जाती है बहुत। So you have to understand what are your go-ahead areas. Be strong on them. ठीक है, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है, लोग भी मेरे साथ खुश रहते हैं, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। सेकेंड, ये अचीवेबल है, मैं सीरियस मौके पे अपने ऊपर कंट्रोल रखूं। गाली देना रोज बार बार अपने आप को याद दिलाऊंगा, कंट्रोल करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। So this is how, a very simple way of how you can bring about a change in yourself through self-awareness. Very basic. Anybody can do that, I'm sure, and you are going to do it. The second is,
So the second is where you sorry, just a minute. Yeah, the second is this one. So here again, I have put. I really like these savage chicken cartoons. They are very much close to life. They depict things in a very clear manner. We will again, in this example, again a very simple way of how you can do self-awareness and bring about a change in yourself. So 3 steps: identify, accept, and then manage. So how do we do that? So अंकल जी ने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, उनको पता है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है तो अच्छे लोग उनके साथ उठना बैठना होगा, मुझे अपनी आदत बदली करनी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम किया है। अब इसमें प्रॉब्लम थी गाली देना। छोटे और भी सिचुएशंस उन्होंने देखा होंगे कि मेरा कपड़े सूखने होते हैं एक गुड बिजनेसमैन के लिए, अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए, वो सब वो ठीक है, लेकिन बड़ा मेजर प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया है गाली देता। अब जो हमने वो पहला वाला कार्टून देखा जिसमें वो नो बोलता है, अगर ये अंकल भी वैसे होते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो बोलते क्या है, गाली तो सब देते हैं, मैं भी देता हूँ, उसमें क्या है, वर्ड ही है, बुरा मानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम। अगर वो उस फेज में है, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। सो सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है ये है मेरी पर्सनालिटी, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया, बोल दिया कि क्या है, सभी गाली देते हैं, गाली तो क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उधर ही अटक जाएगा, वहीं रह जाएगा, हम उसके बियॉन्ड ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद मैनेज करना। तो मैनेज करने में हम कैसे वो चेंज करेंगे आदत, वो हमको अपना खुद डिसाइड करना है। दैट इज योर ओन बैटल, that is your own war. So there could be many things. We took one example of an uncle who gives gali, laziness. For children, playing video games, watching TV. There are so many problems. I don't want to. We know we should understand what is my situation where I'm stuck with. Accept it, and then find plan. What I'm going to do to overcome that, to reduce that. So this is again a very beautiful cartoon. He says that I want greater self-awareness. Why I want greater self-awareness? Because I want to be successful. But can I continue to be unaware of my bad qualities? मेरे में जो बुराइयां हैं उनको साइड में रख दो, वो बुराइयां नहीं है। जो मेरे में अच्छाइयां हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको खुश रहता हूँ। और तो ऐसा नहीं होता है, हाफ हाफ काम करके you cannot go ahead. So this was about self-awareness. I've taken a small part of self-awareness because self-awareness continuation में चलता है। Self-awareness self-motivation के लिए होगा, self-awareness goal achievement के लिए होगा, confidence building के लिए होगा, assertive communication के लिए होगा। So इसके लिए हमने start किया self-awareness के साथ, so that if you are clear about self-awareness and you know how to deal with that and you start working on it, then it becomes easier for you to work on the other aspects which will help you to be more successful and will help you to be able to achieve whatever you decide in life. So I hope today's session was good, you understood and you enjoyed whatever was discussed. In this slide, I have also put my email ID, so that if you have any doubts when you are later on thinking about this, you can mail me on my email ID, and I will try to. I am no genius. I am also
learning a lot of things with you. So while we are learning together, if you are having any doubts and if I am able to help you resolve that, it will be my pleasure and I will want to do it. So my email ID is principal.bcmit@vedantafoundation.org. Vedanta people would know, but others, if you have any doubt, anybody outsider there, you can use this to uh, send me your doubts or problem regarding whatever we have discussed, and I can try my best to help. So thank you so much for being with me today, and we will continue our next series with in the next 15 days. Till then, work on this, be happy, and try to do whatever you can to be successful. Thank you.